Click the bell icon to get latest videos from Ekeeda. Hello friends, myself Professor Uday Bhukre and now I am welcoming you on your own YouTube channel Ekeeda. Hope you are watching my videos regularly. Keep watching, keep learning. Friends, if at all you are watching my video for first time, I request you please subscribe to our channel Ekeeda and also press bell icon for your latest notifications on this course. Students, today we are going to learn for CA Intercourse Accountancy subject, topic name Redemption of Debenture, question number 6 which is on your screen. Following balances appeared in the books of Paradise Limited. Balance is already there. On 1st of April 2000 12% debentures, balance of DRR investment rupees 6 lakhs, represented by rupees 6,50,000 secured bonds of गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो 6 लाख रुपए का अपना इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट है, लेकिन उसका फेस वैल्यू है 6,50,000. Annual contribution to DRR was 1,20,000 made on 31st March every year. So every year on 31st March we will do this. On 31st March 2000 the balance at bank was rupees 3 lakhs before receipt of the interest. Okay, so interest we have to receive. Company sold the investment at 90% of the cost. So 90% of the cost. So what is our cost? Cost is 6 lakhs. So 6 lakh ka 90%. It is 5,40,000. For redemption of debenture at a premium of 10% on the above date, you are required to prepare the following accounts for the year end date 31st of March 2000 debenture account, DRR investment account, bank account and debenture holders account. Okay, so we will prepare that. Friends, now we are ready with our formats. I need to write these opening balances on 1st April 2000 7,50,000 डिबेंचर का बैलेंस था. DRR अकाउंट में बैलेंस था 6 लाख रुपीज ओपनिंग बैलेंस. DRR investment 6 lakhs rupees represented by 10% rupees 6,50,000 secured debenture secured bonds of government of India. So we are having investment of 6 lakhs. उसका face value कितना है? 6,50,000. ओनली फॉर आवर नॉलेज मैंने यहाँ पे लिख के रखा है मेरा फेस वैल्यू कितने का है 6,50,000. एनुअल अप्रोप्रिएशन और contribution to DRR was to be made is 1,20,000 on 31st March every year. So DRR account will be created on 31st March X1.
sorry X2, it will be credited on 31st March X2. Annual appropriation credited to DRR account, that is our entries. PL account debit to DRR account credit. On 31st March X2, our bank balance was rupees 3 lakh before the receipt of interest. They are saying that we were having bank balance of rupees 3 lakh before interest received, but definitely on this we must have received the interest on 31st March 2000 X2. The company sold the investment at 90% of the cost for redemption of debenture at a premium of 10% on the above date. Before that, on 31st of March 2000 X2, I will receive the interest on that investment. मेरा entry क्या आएगा? Bank account debit to interest on DRR investment account. It is calculated on face value 6,50,000 at the rate of 10%. $65,000 का आपको इंटरेस्ट मिला है अभी, और ये इंटरेस्ट आप डीआरआर अकाउंट में क्या करोगे? क्रेडिट करोगे. एज्यूमिंग कि अपना फंड क्या है? क्यूमुलेटिव है, इसके लिए वो क्रेडिट किया है मैंने. What they mentioned here, they sold the investment, company sold the investment at 90% of the cost. Investments are sold at 90% of the cost. 6 lakh का 90% will be 5,40,000. Importantly, rupees 6 lakh का investment है, represented by 6,50,000 secured bonds of गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. इंपॉर्टेंटली जब भी आप ये 90% ऑफ द कॉस्ट बोलते हो तो वी विल अज्यूम, वी आर अज्यूमिंग कि 6 लाख का 90% है. अल्टरनेटिवली इट कुड बी 90% ऑफ 6,50,000. बिकॉज आप थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग रखो, 90% जब आप बोलते हो इन्वेस्टमेंट्स आर सोल्ड एट 90% ऑफ द कॉस्ट, तो सामने वाले के लिए 90% किसका होगा? 650. तो इट इज बेटर नॉट टू कंसिडर 6 लाख, बट आई विल कंसिडर इन प्लेस ऑफ दैट 6,50,000 का 90%. Once again I am repeating, they have said that कि investments are sold at 90% of the cost. 90% of the cost मतलब क्या? आपका कॉस्ट. लेकिन अगर आप मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करोगे 90% ऑफ द कॉस्ट मतलब 90% का फेस वैल्यू. तो ये जब भी आपको देते हैं 90%, 20%, जो भी है वो हमेशा फेस वैल्यू का होगा. ठीक है, तो आपका फेस वैल्यू है 6,50,000 into 90%. It is 5,85,000 what I will get from sale of the investment. What will be your entry, students? Your entry will be bank account debit to DRR investment account. इसका जो भी प्रॉफिट लॉस है ये हम लोग कौन से अकाउंट में एडजस्ट करेंगे? डीआरआर अकाउंट में. तो इन्वेस्टमेंट आप जब बेचोगे तो उसका प्रॉफिट लॉस हम लोग डीआरआर अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं. लॉस ऑन सेल. DRR account is debited with rupees 15,000 for loss on sale. The loss is debited. Then what they are saying? They are saying that they redeem the debentures at a premium of 10%. तो जब भी आप redeem करना चाहते हो तो what will be your first entry for making amount due? Debenture account debit, premium on redemption debit to debenture holder account. तो हम लोग पहले debenture holder को credit कर रहे हैं, बाद में हम लोग debit दे देंगे इफेक्ट.
बाय प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। प्रीमियम कितना है स्टूडेंट बताया उन्होंने, 10% बताया, तो 10% कम्स टू 75,000। तो 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट होगा, प्रीमियम अकाउंट डेबिट होगा। याद रखना है प्रीमियम अकाउंट अल्टीमेटली विल बी डेबिटेड टू डीआरआर अकाउंट। तो डीआरआर अकाउंट में डेबिट होकर ये क्रेडिट होकर क्लोज हो जाएगा अकाउंट। तो पहले मैं डीआरआर अकाउंट में जा रहा हूं 31 मार्च X2 को ही, $75,000। और ये जो डिबेंचर होल्डर अकाउंट हम लोगों ने क्रेडिट किया है 12% डिबेंचर वाला, इट विल बी डेबिटेड टू डिबेंचर अकाउंट। $7,50,000 अकाउंट गेट क्लोज्ड। तो आपने क्या किया, अकाउंट क्लोज किया। किसका अकाउंट क्लोज किया, डिबेंचर अकाउंट। अभी डिबेंचर होल्डर्स को आपने पेमेंट किया होगा, तो एंट्री कैसे आएगा, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। $8,25,000 ये आपने क्या किया, उनको पे किया। तो बैंक अकाउंट विल बी क्रेडिटेड फॉर दिस। $8,25,000 डिबेंचर होल्डर अकाउंट हम लोगों ने पे किया, तो उसको क्रेडिट कर दिया यहाँ पे। रिडम्पशन इज डन। नाउ व्हाट अबाउट दिस डीआरआर अकाउंट? To the extent of face value of debentures redeemed, we will transfer amount to general reserve from this account. Face value of debenture redeemed is how much? 7,50,000। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ट्रांसफर कर रहे हैं। अमाउंट इज इक्वल टू फेस वैल्यू ऑफ रिडम्पशन। फेस वैल्यू ऑफ रिडम्पशन कितना था, 7,50,000। Now when we close the account, if we find credit balance, that means we have a capital profit which is transferred to capital reserve. If we have a debit balance, that will be set off against P&L account. So let us see which side is heavier. Here we can notice debit side is heavier. So if debit side is heavier, that will be made good out of profit and loss. This 55,000 shortfall in DRR account, that will be transferred to profit and loss. That will be made good out of profit and loss by making further transfer. Student, let me tell you one more thing which is possible, which is there in your institute module. They have not considered premium on redemption to write off from DRR, but we have considered, which is rule. Second thing which is not considered in your institute book is transfer to DRR is always equal to transfer to general reserve is always equal to face value of debentures redeemed. तो हम लोगों ने वो फॉलो किया है जो आपके मॉडल के क्वेश्चन में ये फॉलो नहीं हुआ है। तो लेट मी टेल यू दैट क्लैरिफिकेशन फर्स्ट। एंड नाउ व्हाट एवर इज द डिफरेंस इन योर डीआरआर अकाउंट डेबिट बैलेंस, दैट मीन देयर इज अ शॉर्टफॉल, there is a shortfall, and this shortfall will be made good from your profit and loss account. So in this way we have closed our DRR account. Now let me close my bank account. Payment to debenture holder is on 31st March X2. This is the closing balance of your bank account after redemption.
In this way, this small, short and sweet question is over. In exam you can expect this kind of examples. बड़े बड़े एग्जाम में आने का चांसेस मेरे हिसाब से तो कम होगा, बिकॉज आपका एग्जाम का जो टाइम अलोकेटेड है उसके अंदर आपका आंसर बैठना भी तो चाहिए. दिस काइंड ऑफ एग्जांपल्स कैन डेफिनेटली बी देयर इन योर एग्जाम, सो प्लीज refer this question before your exam. And before I wind up the lecture, I want that you please go through the video at least for 1 or 2 more times to understand it better. For your any doubts, any clarification, please put in the comment box. We will try to resolve your queries at earliest. Thank you student for watching this video. God bless you.